Guys, welcome to Unacademy OPSC platform. Good morning to all. So in today's session we'll discuss fundamental rights. We'll see important questions on fundamental rights, which is an important topic in Indian polity. One of the important areas in Indian polity, you'll find a good number of questions from this section. Fundamental right is very important and you will get. So what we'll discuss important questions in this session, so that you will find some questions are repeated, some questions are directly asked from this class session. तो आम कौन देखा ता पूर्व अनएकाडेमी उपर मुझे ब्रीफ आपको ओवरव्यू देउछि, देन विल स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण माने जानि अनएकाडेमी इज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, जोटी कि आपण माने बहुत सारा कोर्सेस देखि परिबो अनएकाडेमी रो. तो आपण सब कोर्स सब गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपेयर करें. जदि अनएकाडेमी आपण मैंने प्रिपेयर करछंती, देन यूज माय रेफरल कोड दैट इज वैष्णव पाठी लाइव एंड यू विल गेट 10% फ्लैट ऑफ, राइट. सो ये आपन को मिल जाओ बुझी होचंती. जदि आपण आज अनएकाडेमी ऐप डाउनलोड करना तो डाउनलोड करनियंतु, करिक ओपीएससी गोल सेट करके आपण कोड यूज करंतु वैष्णव लाइव एंड वॉच फ्री लाइव क्लासेस. ता सहित आपण प्लस रे जॉइन करंतु. तो प्लस रे हमको कौन कौन बेनिफिट्स मिलिबो ता ऊपर देखंतु. ये होची इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनएकाडेमी. तो आपण सब टॉप एजुकेटर मानकर क्लास लेसन्स देखि परिबो अनएकाडेमी वन प्लेटफॉर्म रे. तो आपण को एग्जाम प्रिपरेशन करबा पई बेस्ट हेल्पफुल रहइबो, मोस्ट इफेक्टिव रहिबो एग्जाम प्रिपरेशन पई. तो कौन रोचे हमर देखो बैच कोर्सेस हमर कौन कौन चली. तो बैच कोर्स दैट इंक्लूड्स योर 6th to 10th ज्योग्राफी, 6th to 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज रे चली. तो आपण एथरे एनरोल करि परिबे. वंस यू आर ए सब्सक्राइबर, गोटे सब्सक्रिप्शन आपण प्लस रे नेले आपण सब कोर्स समस्तंक ठारू आपण देखि परिबे. समस्तंकर क्लास आपण एक्सेस करि परिबे, सब एजुकेटर क्लास को. वंस यू आर ए सब्सक्राइबर on Unacademy, okay, if you take a subscription on Unacademy, then you can attend all the lessons from all top educators or all the educators. तो स्पेशल ऑफर गोटे रोचे हमरो एबे जदि आपण जॉइन करूछन 1 year सब्सक्रिप्शन रे. इफ यू टेक 1 year सब्सक्रिप्शन देन यू विल गेट, इफ यू टेक देखो गोटे ऑप्शन अच्छी. जदि आपण एबे नौचंदी सब्सक्रिप्शन गोटे मासर सब्सक्रिप्शन ले गोटे वर्षर आपण यदि सब्सक्रिप्शन नौचंती ताले आपण को 2 months एक्स्ट्रा फ्री मिलिबो. इफ यू बाय 12 month सब्सक्रिप्शन देन यू गेट 2 months एक्स्ट्रा फ्री. दिस इज वैलिड टिल 15th May. तो अनएकाडेमी ऐप आपण डाउनलोड करके क्लास देखो सब्सक्रिप्शन करंतु, तो आपन को हेल्प करिवो ये सब. ओके, तो दैट्स हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर लर्निंग आउटकम्स एंड इट विल बी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल फॉर क्रैकिंग द एग्जाम. ओके, सो ये थिला आपनकर ऑप्शंस. आउ कोन रच बेनिफिट्स देखो. फ्री और प्लस कोर्स भीतर डिफरेंस कोन. फ्री रे आपन लिमिटेड सिलेबस देखि परिबे, ये कंप्लीट सिलेबस पाइबे आपण कवर कर परिबे. ये लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट होची, ये अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट होची, बुझी पाउछंती. सो ये सब होची आपनकर बेनिफिट. ये सब होची बेनिफिट. आपण अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट पाइबे, अनलिमिटेड पीडीएफ्स पाइबे. ओके, सो ये बेनिफिट आपण अवेल कर परिबे. आउ रोची रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस रोची टॉप एजुकेटर मान द्वारा आपण पाइबे. एठी किंतु रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन रहइबो नाही. तो प्लस रो फीचर्स कोन रोची अनएकाडेमी रे लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स, कंप्लीट एग्जाम पे प्रिपेयर करि परिबे. रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन रोची, वीकली फ्री मॉक टेस्ट रहइबो, फ्री टेस्ट सीरीज एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ योर सिलेबस,
So have many other features and plus अपन Unacademy रे join करंतु 1 month रू अपन देखुन 1260 रोची 3 months को 3150 रोची 6 months को 5040 रोची 12 months 6300 रोची 24 months रोची 7560. So this is how you can maximize your learning outcomes. Okay. So ये हूँ आपणकर बेनिफिट बुझीगला. तो आपण नियंतु 24 मास ने 7560 बहुत कम रोचे आपन को. अब 12 मास ने आपन को 6300 देवा पड़ो बहुत कम. 12 मास एबे ऑफर जो चली 12 मास जदि आपन नौचंती तो आपन 2 मंथ्स एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री मिल. तो दिस इज योर Unacademy. Join today and realize your dream. Okay. ये होची दिस इज योर Unacademy. ओके. सो आज देखियो हम किसी टॉप क्वेश्चंस. तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दिया छी, शेयर कराई छी. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक क्लिक करके जॉइन करि परिबे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे सब कुछ दिया छी केमे जॉइन करिवे, कोन एडवांटेजेस, एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक. ओके. तो which of the following is given the power to enforce the fundamental rights by the constitution? First question कहूची एटा आस्थिला हमर BPSC 2005 रो क्वेश्चन. कहार अछि पावर जे के एनफोर्स करि परिबे फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? Who can enforce fundamental rights by the constitution? All courts in India, the parliament, the president, the supreme court and high courts. तो किए आपनकर फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करि परिबो कोंतु? फंडामेंटल राइट एनफोर्स के कर परिबो फंडामेंटल राइट के एनफोर्स कर परिबो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. का पाखर पावर अछि फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करिया पय? पावर का पाख दिया जी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. आर्टिकल 32 टू 26. 32 रे आपण जाई कि यदि फंडामेंटल राइट आपनकर भायोलेट होछि आपण क्लेम करिवे, आपण जुरिस्डिक्शन रे आपण फंडामेंटल राइट रो भायोलेशन होतले तार जस्टिस पाई परिबे. 32 रे रीट जुरिस्डिक्शन अछि ऑर्डर रीट फंडामेंटल राइट्स भायोलेशन बेले. हाई कोर्ट आपणकर 226 अछि. ता माने के एनफोर्स करि परिबो फंडामेंटल राइट एनफोर्स करि पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दिया जाइछि. ओके. ये हल्ला कथा. ओके. बुझी पहले कि अपन ने क्वेश्चन और कमेंट सेक्शन में आंसर दियंतु जो मन चले ने. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन एनफोर्स फंडामेंटल राइट. I said 32 and 226. Fundamental rights are justiciable, non-justiciable, flexible, rigid. Answer this question. Fundamental rights टा कौन हो? फंडामेंटल राइट टा जस्टिसेबल हो ना नॉन जस्टिसेबल हो ना कौन हो? रिजिड हो. आंसर भैया जो मैंने यूट्यूब रे देखो लाइव आंसर दियो कमेंट सेक्शन में. ट्राई इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स. दीज आर हाईली वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस. सो यू प्रैक्टिस दिस. फंडामेंटल राइट्स का कौन कहते को आंसर दियो. फंडामेंटल राइट्स होची जस्टिसेबल राइट्स. दे आर जस्टिसेबल. क्वाइट जस्टिसेबल अर्थ होची that can be enforced in the court of law in case that is violated. Fundamental rights are violated, they can be enforced in the court of law. That is justiciable. Which of the following is correct statement? Nehru report had advocated the inclusion of fundamental rights. Yes, it is correct. No issues. तो ये डायरेक्टली करेक्ट ये रिपोर्ट अच्छे और देखा दरकार नहीं कारण कोटा करेक्ट पचार. तो BCD देखा दरकार नहीं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेफर टू फंडामेंटल राइट्स. नो. August offer include fundamental rights also? No. This is question number 3A. The Cripps mission? No. So first answer which is statement correct. Nehru report insert color or they advocated for this report recommended for the inclusion of fundamental rights in the Constitution of India.
This statement is absolutely correct, so no need to refer to other statements. Which of the following statement is correct? Bajache IAS exam pre 2017 ro question, very recent, so 3 years back ro question. Writes the claims of the state against citizens. So okay, state claims of the states against citizens, no. Rights टा होची citizen कर claim against the state ना. State कौन claim करची? Citizen माने claim करची rights ना against the state के हमको ये rights मिल. Rights are privileges which are incorporated in the constitution of state. Constitution of a state. Rights are incorporated privileges which are included in the constitution of India, not a state. Rights are claim of the citizen. Yes, obviously A होची opposite होची answer plus CH. Rights are claims of the citizens against the state. Rights are claims of the citizens against the state. So ये होची answer आपनका. Rights are claims of the citizens against the state. Okay. The fundamental rights cannot be suspended. Yes, fundamental right cannot be suspended. No, can be suspended during emergency. That is also possible. Fundamental right को suspend करी परिबा. The can be suspended by order of prime minister. No, prime minister order है परिबनी. May be suspended the will of president. Fundamental right will president का will रहबनी. जितने reason थी वो situation थिबो सेतबेले सस्पेंड करि परिबे फंडामेंटल राइट, किंतु सेटा होची इमरजेंसी टाइम रे. मे बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी. विल ऑफ द प्रेसिडेंट नॉर्मल टाइम रे प्रेसिडेंट को फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करनो, इट्स नॉट पॉसिबल. इमरजेंसी लागि छि त फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो, गोटे होची 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो. आउ जो अदर फंडामेंटल राइट्स रहला सेटा प्रेसिडेंट को ऑर्डर द्वारा सस्पेंड हो. अदर फंडामेंटल एक्सेप्ट 20 एंड 21 एको छाड़ी 20-21 छाड़ी का सब आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑर्डर सस्पेंड कर परिबे. 19 ऑटोमेटिकली नेशनल इमरजेंसी बेले ओनली इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी तो हमें सस्पेंड कर परिबा, जोटा कि वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन केस लागू छै. वार एक्सटर्नल एग्रेशन बेले यदि एक्सटर्नल इमरजेंसी लागि था, दैट इज नेशनल इमरजेंसी. In the context of India, which of the following is the correct about relation rights and duties? Rights are correlated with duties. Yes, 2017 question IAS ro. Rights are correlated with duties, absolutely correct. Which is correct पचार तो 6 ए आंसर हो डायरेक्ट. अब जीवा दरकार नहीं, बी और सी को जीवा दरकार नहीं. राइट्स एंड ड्यूटीज दे आर कोरिलेटेड विथ इच अदर. राइट देखंतु आपण जदी गोटे राइट क्लेम करछन कि आई विल एक्सरसाइज दिस राइट्स, सो करस्पोंडिंग रूट एज ए सिटीजन आल्सो. सपोज कलेक्टर दे एंजॉय सर्टेन राइट्स, इम्यूनिटीज, पावर्स. कलेक्टर कर किछ ड्यूटीज भी अछि सिटीजन, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट पीपल को प्रति. So everyone has certain rights as well as duties. So because both are means complementary. Both two sides of one coin, you can say. Rights and duties. Under which article of the Constitution of India fundamental rights have been provided to the citizens? Obviously, a direct question. को article ले कोची fundamental rights को insert करिसेंती or given to the citizens. आर्टिकल 12.35 कौन है? आर्टिकल 12.35 आर्टिकल 12 to 35 deals with fundamental rights and it is mentioned in part 3 of the constitution. part यदि पचारे part 3 आर्टिकल पचारे आर्टिकल 12 to 35 that deals with fundamental rights. So under the following, which of the following article the Indian constitution guarantees fundamental rights to the citizens? Just I said 12 to 35, 12 to 35, article 12 to 35. Okay. Which of the following articles of the Indian Constitution puts an absolute limitation on the legislative power? Limitation माने कौन? Restrictions. देखो 14 रे कौन होची? article 13, 14 कौन कोची? 13, 14 कोची. 13 कोची law, defines law. 14 कौन कोची? Following article Indian Constitution puts an absolute limitation on the legislative power. Legislative power रे आपण कौन करछन्ती? Absolute limitation restrict करछन ना नहीं? Equality before law. Equality before law. Nobody is above law. तामाने Constitution को violate करि परिबो नहीं. Absolute limitation on the legislative power. That is everyone is no one is above law. Arbitrary exercise हेई परिबोनी law रो. Arbitrary अर्थ
random power exercise करि परिबोनी arbitrary exercise ही परिबोनी power everyone is equal before law ये सब जो article 14 रो features that is equality for law right to equality कथा कहूँ okay under which article the constitution reservations in admission to educational institution including private unaided those OBC ST SC is made को article रे reservation कथा कहूँ admission to educational institutions including private and unaided to OBC ST SC made this is 15 class 4 sorry 5 हमारे रिजर्वेशन कथा कहूँ 15 क्लास 5 10b 15 क्लास 5 रे कौन अच्छी हमारे एजुकेशन जो रिजर्वेशन अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रे इंक्लूडिंग प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट द सेक्शन प्राइवेट एंड अनएडेड टू ओबीसी एसटी और एससी इज मेड दिस इज पी which article of the constitution gives precedence to the constitutional provisions over the laws made by the union parliament or state legislature देखो constitutional provisions को 13 दबो 11 है कहीं ना 13 को ची any law that is in derogation with the fundamental right that violates constitutional provisions fundamental rights that law will be null and void that law will be struck down that law will be invalid को आर्टिकल प्रेसिडेंस है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को 13 फंडामेंटल राइट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पार्लियामेंट जो लॉ बनाउछि ते कंट्रावेन करूछि कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करूछि कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंटरी लॉ इज नॉट इन लाइन विथ द कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देन दैट लॉ विल बी वायोलेट आर्टिकल 13 होछि लॉ डिफाइन्स लॉ जो लॉ फंडामेंटल राइट को वायोलेट करू से लॉ को हम कोन कहबा इनवैलिड करबा the Supreme Court judiciary will make that law null and void strike down that law okay the law which ultra virus okay that contravenes okay the main objective of article 13 of the Indian constitution is to secure the paramountcy of the constitution regarding obviously fundamental right article 30 का पूछी फंडामेंटल राइट ही पारामाउंट सिस्टम 12 to 35 और कौन डील कर फंडामेंटल राइट से 13 ता भीतर अच्छी 13 ऑब्वियसली एम कौन टू एस्टाब्लिश और सिक्योर पारामाउंटसी मींस सुप्रीमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स 13 भी कहि जे कौन से लॉ यदि पार्लियामेंट लॉ बनाउछि बा लेजिस्लेचर इज फॉर्मुलेटिंग एनी लॉ मेकिंग एनी लॉ व्हिच इज contravening which is violating the provisions constitutional provisions and that law will be void which of the following articles of the Indian Constitution belongs to a different category 14 15 16 19 कोटा different category belong करछि 14 15 16 19 देखो 14 हला इक्वालिटी 16 एम्प्लॉयमेंट कथा 15 भी रहला से इक्वालिटी कथा कहूछि 19 हो फ्रीडम कथा कहूछि 13 टा कोन आंसर डी 19 टा होछि राइट टू जो फ्रीडम कथा कहूछि ओके फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन इन सब रही जोड़ा हमारा फ्रीडम मूवमेंट फंडामेंटल राइट्स रही राइट टू फ्रीडम तो 15 16 14 सब इक्वालिटी होला 14 इक्वालिटी लॉ बिफोर लॉ 15 से इक्वालिटी नो रिजर्वेशन किंतु देयर आर सर्टेन केसेस एक्सेप्शंस आर देयर रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी वीकर सेक्शन में करा जेमते हम देखिले 15 क्लास 5 रिजर्वेशन करूची ओबीसी किंतु वीकर सेक्शन पाई रिजर्वेशन करि परिबे दैट इज अलाउड ओके तो एटा क्वेश्चन कौन थिला डिफरेंट कैटेगरी एटा राइट टू फ्रीडम एटा सब इक्वल राइट टू इक्वालिटी रे अछि हला सेति पई एटा अछि राइट टू इक्वालिटी सब 14 16 15 इक्वालिटी जाउछि हला 14 16 एटा केवल ऑड लागुछि तेनो आंसर हमर कोन हो कोडा डिफरेंट कैटेगरी रहला तो आंसर हो आंसर कोडा आर्टिकल 19 which of the following in the Indian Constitution of the right to freedom is granted by 4 articles which are right to freedom हम देखिले right to freedom को आर्टिकल ले देछि ग्रांट कराइ छै 14 आंसर 19 to 22 right to freedom कथा कहू छै ओके right to freedom 19 to 22 which of the following enables the Supreme Court of India to deduce a fundamental right to equal pay for equal work कोटा फंडामेंटल राइट को डिड्यूस करिवो बा सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कोर्ट माने जो डिसीजन दवा राइट फंडामेंटल राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क डिड्यूस ए फंडामेंटल राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क
देखो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जदि अच्छी कौच सब सोशलिस्ट अच्छी इक्वालिटी सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी अच्छी इक्वालिटी ऑफ जस्टिस सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी सोशलिस्ट कथा कही तो सोशलिस्ट वर्डटा इक्वल पे इक्वल वर्क बट दिस इज कॉमन टू ऑल ये क्या पढ़ा होना यूट्यूब रे कई स्पेसिफिक लर्नर्स न था इट्स ओपन प्लेटफॉर्म it YouTube is online live if you are coming if you are serious aspirant then you just follow the rules norms and attend otherwise don't okay so ये हूँ रेड विथ आर्टिकल 14 क्या पढ़ा जाए पर्टिकुलर इंडिकेटर के लर्नर्स न था यूट्यूब रे ओके आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो रीड 6 हूँ रेड विथ आर्टिकल 16 ओके तो डी हूँ ए बी सी ऑल रेड टुगेदर ओके तो 16 हूँ तो समस्त सोशलिस्ट यूज इन द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी हूँ 14 सी हूँ ए रेड विथ आर्टिकल 16 डी हूँ ए बी सी ऑल रेड टुगेदर ओके 14 आर्टिकल 14 इक्वालिटी कथा कौन 16 इक्वालिटी कथा कौन एम्प्लॉयमेंट रे तो ए बी सी टुगेदर सोशलिस्ट भी इक्वालिटी कथा कौन तो ए बी सी टुगेदर डी हम आंसर okay prohibition of discrimination on the ground of religion etc article 15 of the constitution of India is fundamental right classified under article 15 को हम क्लासिफाई करछंती का अंडर रे article 15 का अंडर रे क्लासिफाई करछंती prohibition of discrimination on the ground of religion etc 15 article 15 कौन कहूची 15 कहूची 14 अपन देखो फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं एक्सप्लॉयटेशन भी नुहे एजुकेशनल कल्चरल राइट्स भी नुहे राइट टू इक्वालिटी ओके सो फ्रीडम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये होची राइट टू इक्वालिटी अछि ओके राइट टू इक्वालिटी Last question देखियो आ गोटे क्वेश्चन in the Indian constitution the right to equality is granted by 5 articles they are right to equality कोट कोड अछि right to 14 रो 18 हमको right to equality मिलबो 14 to 18 17 होछि right to equality 14 to 18 articles the right to equality the granted is 5 articles they are 14 to 18 right to equality को जगह लिखा है आंसर दिस क्वेश्चन राइट टू इक्वालिटी कोटा 14 रु 18 इक्वालिटी भितर डिटेल करछि राइट टू इक्वालिटी ओके राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स दे आर 14 to 18 okay so which one of the following is not included in the fundamental right to equality as enshrined in the Indian constitution देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ अच्छी सोशल इक्वालिटी भी रहिबो इक्वल अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक इक्वालिटी किंतु सोशल इक्वालिटी आम इकोनॉमिक इक्वालिटी कथा कहि नै इकोनॉमिक इक्वालिटी कथा लिखा जाय नै कोठी एंसर कन्सेशन इकोनॉमिक इक्वालिटी लिखा है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी इट इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन which of the following is not included in the fundamental right to the equality as enshrined in the Indian constitution that is economic inequality equality is not mentioned anywhere economic equality is not mentioned anywhere in the constitution economic equality कोठी मेंशन है नहीं social equality equal opportunity अच्छी equality for law अच्छी but economic equality is not mentioned Hello, economic equality is not mentioned anywhere in the constitution. Which of the following articles of the constitution deals with the fundamental rights related to the exploitation of children? এটা দেখো কেতে एग्जाम রাখছি HPS Himachal Pradesh 2019
UPPCST is 9/11 pre 2005. Which of the following articles of the Constitution deals with the fundamental rights related to the exploitation of children? That is exploitation of children को article अछि article 24. Exploitation of children prevention kariba fundamental right, any hazardous employment children. Okay, so exploitation of children अछि, that is 24, mentioned in 24. Okay, so इतला क्वेश्चंस आज द टाइम तो एबे हे छि, हमें आगु देखिबा एडिशनल क्वेश्चंस अनदर टॉपिक सहित. तो still then take care, stay tuned, keep learning, keep going. तो जो मैंने प्रिपेयर करछो, जस्ट आई विल सजेस्ट यू टू जॉइन अनएकेडमी लर्निंग हब रे आपण सब कोर्स डिटेल कोर्स देखि परिबे along with the questions. In the YouTube limited time we cannot extend the topic, we cannot focus on elaborate discussion here because the time constraint, and limited time रे हम कोन करबे just questions किछि सॉल्व करछन important questions so that it will help you to crack the exam. And also if you are interested, you can also follow Unacademy learning hub, and for that you need to just download the app and set OPSC goal. Link रे description box link there अछि, आपण केमि जॉइन करबे कोन करबे, so that's how you can maximize and you can fulfill your dream, you can realize the dream of joining government job or cracking the civil service. Okay, thank you, thanks a lot, take care, goodbye, see you in the next session, all the best.